quickly shift focus to a rather big debate, and that is if the Congress finds itself in crisis in Puducherry, it's sweeping the municipal polls in Punjab. Well, amidst protests against the 3 farm laws, Congress seems to have recorded a thumping victory in Punjab's local body elections, completely decimating the Aam Aadmi Party, the BJP and the Shiromani Akali Dal. Three months after farmers began their agitation at Delhi's borders, the BJP felt its effect in the local body polls in Punjab. The anger in Punjab over the 3 contentious farm laws saw the Congress get a free run. It swept the municipal polls with ease. The Congress won 1,199 of the 1,815 municipal councils and 281 of the 350 municipal corporation seats. But the biggest victory for the Congress came from Bhatinda, where the Congress managed to snatch the Akali Dal's pocket borough after 5 decades. ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੀ ਅਗਲਾ ਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਆਉਣੀ ਹੈ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਆਉਣੀ ਹੈ ਸਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ The Shiromani Akali Dal failed to get any political mileage from walking out of the Modi government. ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਸ ਹੱਦ ਤਾਈਂ ਗਿਰੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਤੀਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਛੋਟੇ ਮਾਸੂਮ ਵਰਕਰ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ The Aam Aadmi Party, eyeing to make inroads in Punjab Assembly elections next year, also got a big jolt. For the Congress, whose fortunes have fallen drastically in many states, Punjab is a consolation. If the civic polls are any indicator, Captain Amrinder is on a good wicket when elections happen in the state next year. With Manjeet Sehgal in Chandigarh, Bureau Report, India Today. All right, so what seemingly now is the outcome of the municipal polls in Punjab prompts us to ask certain questions this evening. Can it be seen as a referendum on the new farm laws is the big question. Does that mean it's advantage Congress right now where Punjab is concerned? Because if you just look at the math in terms of the figures that are coming up, Congress is sweeping the municipal polls. The BJP completely out of the equation in Punjab. And what does it say for elections 2022? Will the farm stir be the backdrop of the mandate which would be given in 2022 when Punjab goes to vote? Let's cut across to our guest this evening. I have RP Singh, BJP spokesperson. I have Charan Singh Sapra, Congress spokesperson. I have Majinder Singh Sirsa from the Shiromani Akali Dal. And I have Pushpendra Singh, President Kisan Shakti Sangh. RP Singh, sir, I'll come to you first. And the question I want to ask you is, as much as the big story right now coming in from Punjab is Congress sweeping the municipal polls, the big story is also, sir, in 2 decades, the BJP has fought the elections alone in Punjab. And what the numbers coming in seemingly decimated. 2 decades, sir. It's always gone with the Akalis before, for the first time going it alone and being decimated. Do you see it as a referendum of the farm laws? Well, if you talk about the referendum of the farm laws, then there was an election in Rajasthan recently. What happened there? The Panchayat elections. There was an election in Bihar also. There were by-polls in UP also. There was elections in Panchayat election in Goa also. So we won all those elections. There was an election in Arunachal also. We won those elections after the farm laws were brought in. So this is confined to Punjab, and there's a problem in Punjab. We accept there's a problem in Punjab, and we'll sort it out. But how the elections were contested, let's talk about that also. Our party president was not allowed to campaign. Police protection was not given to our candidates. They were not allowed to move out of the home. And Congress workers and leaders, I can send you a picture of a Congress leader who smashed the car of our party president there in Firozpur. So that's how the elections were contested. The machinery was used, and then under the grab of farmer protest, it was done. It was blatantly done under the grab of the farm protest. That's known to everyone. And we are accepting it. Okay, we have to accept the verdict. We are accepting the verdict. But saying that it was a very fair poll, it was not a fair poll at all.
we have filed our complaints. I can send you videos also. One of my local candidate of the corporation, woman candidate, was beaten by Congress workers. I'll send the video. A woman candidate was slashed by some 7-8 of them, and no case was filed. They said we won't file the case. So that's how the election was contested. But even then, we have done we have done good in certain pockets. Pathankot, we have got 11 seats in spite of all this Gundaism which they did. But let me remind you one thing which is very dangerous and which is, I must tell you this. There is a municipality in one of the districts which has been won by CPI. And mark my word, you should mark this is what's going to happen. And there are people in Anandpur which have won independent and have affiliation toward, neither toward Congress, neither toward Akali Dal, they have affiliation otherwise. And similar is the case, certain cases Bhikkhivan also. So there is a trend which Mark will sit again after a year. The left in new form or new name will be there in Punjab this time. And we have seen what has happened earlier in Punjab when the Naxalism was at the peak in 70s. All right, okay. Mr. Singh, you said that your candidates were not allowed to campaign, they were not allowed to leave their houses, they were not given security. The fact, sir, that a candidate cannot go out and campaign because he fears for his security also says what the mood of the people is today in Punjab, wouldn't it? No, not at all. No, not at all. I mean, why would he be scared to campaign, sir, then? No, it's not scared to campaign. If you have Congress goon left open, and there, I can send you a picture of a congressman smashing our president's car, and then no security was provided. I mean, can a state president car being smashed? All right, so that's a charge, Charan Singh Sapra. But by the way, yes, let's begin with the fact where credit needs to be given. It's seemingly you're sweeping the polls. Congress is sweeping the municipal polls right now. My question, sir, is, which you've been accused not just by the BJP, but their old ally. They've gone it alone for the first time in 20 years in Punjab. But even the Shiromani Akali Dal has accused you, charged you of using state machinery to make sure you sweep this election. No, Preeti, it's absolutely false. Let me answer that in two proverbs of Hindi. Khisiani billi khamba noche and naach na aaye aangan teda. Now, these are the reasons which the parties who have lost can always give. It's a clear-cut verdict. It's a severe drought situation for BJP, Aam Aadmi Party as well as Akali Dal. And it is a bumper crop of votes for the Congress party. This election verdict shows that it's a victory of reality over jumlas, and also the BJP has to open its eyes. It's a clear referendum for the state government, for the Congress government in the state, and it has also given a clear verdict that the ego of Narendra Modi has to be defeated, and the way they have got the national budget or the way there is a price rise in the country, it clearly rejects BJP. And it also rejects Aam Aadmi Party. The theatrics of Aam Aadmi Party have not been accepted by the Punjab people. The Akali Dal has been outrightly rejected. The people of Punjab have given a clear verdict, perform or perish. This is the verdict of Punjab which has come today. Okay, I have Majinder Singh Sirsa also right now who's joined us from the Shiromani Akali Dal. Mr. Sirsa, the fact is, ultimately, if you just go by the sheer numbers that are filtering in right now, it does seem giving up the Bharat Ratna by Prakash Singh Badal, leaving the alliance with the BJP, giving up cabinet posts really hasn't tantamount to nothing. You haven't really quite gotten the returns which you see on ground. People haven't bought the story of the Akali that they are with the farmers. So first of all, I must tell you that this election is not corporation, which is a city vote. And especially these elections traditionally were fought by BJP. As an alliance partner, we are the partner in rural and BJP was our partner in urban areas. So in most of the areas, if you see, we are the first time we have contested elections. Historically, we have never contested these elections in rural urban areas, because BJP was one who was contesting in urban areas, first of all. Secondly, the picture is very true when a national president talks with his father, who used to be a Deputy Chief Minister and also Home Minister, if he is attacked by the Congress goons,
Now you can very well understand that what would be the status of a simple candidate. Understand that what would be the status of a simple candidate who's a municipal committee candidate who has to contest for 800 or 1,000 votes. Do you think that Congress will let them contest the elections? And I must tell you one thing I prize about on your national channel, that most of our candidates' nomination papers were rejected. Now, if Congress was so confident about their victory, why the situation arises that they have, in fact, 30% of our candidates' nominations were rejected, in spite of that Sukhbir Singh Badal has to go all the way to get the nomination papers accepted, and he was attacked very much in the presence of police and the Deputy Commissioner and SSP of this district. So you can very much assess the situation of Punjab, but let them enjoy this, and I think they should live in this kind of a situation where they feel that hum jeet gaye hain. And the time is not far away, just 10 months away, and if they feel that they are so confident about their victory, I would request Charan Singh Sapra ji that they should call up a house and call for election. That it's a good time. If you got such a huge victory, then you should call for election and see the results coming the next day. Why are you shying away? You should call election. You know, I just want to correct myself, sir. I want to correct myself. Yeah, Prakash Singh Badal did not give, it's not the Bharat Ratna, it's a Padma Award. I had a slip of tongue there, but I want to cut across to Chaudhary Pushpendra Singh, President Kisan Shakti Sangh. चौधरी साहब, अब ये बताइए, ये जो म्यूनिसिपल पोल में कांग्रेस को इतना सपोर्ट मिला है, बीजेपी जो पहली बार 20 साल में अकेले लड़ रही है, अकाली जो वहां पर लड़ रहे हैं, उनको इतना सपोर्ट नहीं मिला है, क्या ये कह सकते हैं कि जो आंदोलन दिल्ली के बॉर्डर्स पे हो रहा है उसका नतीजा है? देखिए प्रीति जी, निश्चित रूप से जो सारी फेलियर्स हैं वो एक्यूमुलेट होती चली जा रही हैं बीजेपी की। ये शुरुआत हो जाती है नोटबंदी के समय से ही, उसके बाद जीएसटी वाला, और उसके बाद तालाबंदी या लॉकडाउन जो किया गया, किसान आंदोलन हुआ, नौजवान आज सड़कों पर है, नौजवान के पास कोई रोजगार नहीं है, किसान सड़कों पर है। तेल की कीमत जब $120 में कच्चा तेल आता था और 50-55 रुपए में बिकता था, तो ये अपने कुर्ते फाड़ करके सड़कों पर प्रदर्शन करते थे। आज उसके आधे कीमत पे। Sir, let's go one by one. Mr. Singh, I'll come to you. Mr. Singh, right after this, I'll come to you, sir. Sir, RP Singh, sir, come on. Sir, I'll come back to you right away. Sir, I'll come back. Sir, let me save myself. Mr. Singh, let me save myself the embarrassment of putting your audio down, sir. Let me save myself the embarrassment. I'll come to you. चलेगी नहीं श्रीमान जी। चलिए चौधरी साहब, जल्द आप बोलिए अपनी बात खत्म करिए। ये 1 मिनट इन्होंने खराब कर दिया, इनका काट लेना आप आगे जा करके। अच्छा, मैं ये कह रहा था, जब $120 में कच्चा तेल आता था और पिछली सरकार 50-55 रुपए में बेचती थी डीजल पेट्रोल, तब ये कुर्ते फाड़ करके नंगे हो के जो है यहाँ पर प्रदर्शन करते थे। अब उसके आधे में आ रहा है, $60 के आसपास तो अब है प्राइस, उससे पहले 30 तक गया था और $20 तक भी चला गया था। तब भी आपने 25-26 रुपए का तेल आ रहा है, जिसको आप 90-100 रुपए में बेच रहे हो। सारे देश की जनता को अंधी नहीं बैठी हुई है कि आप अत्याचार करते जाओगे, सब लोग सहते चले जाएंगे। युवा बेरोजगार है, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान रोज मुझे फोन करते हैं कि हमारी पेंशन काट दी गई है 2004 से। पैरामिलिट्री आर्मी के अलावा सारे जितने भी पुलिस हो, ये सबकी पेंशन काट दी गई है। इस बात चौधरी साहब, नहीं, आरपी सिंह जी का कहना था, सर मेरी बात सुनिए चौधरी साहब, आरपी सिंह जिनका कहना था, देखिए चुनाव जो म्यूनिसिपल हैं वो राजस्थान में भी हुए हैं, वहां पर तो ऐसा नहीं हुआ, ये पंजाब की एक प्रॉब्लम है, पंजाब तक सीमित है। आपको लगता है कि आप जब हरियाणा इलेक्शन पे जाएगा, वेस्टर्न यूपी में है, क्या इसका फर्क पड़ेगा या ये पंजाब तक ही सीमित रहेगा? उसी बात पे मैं आ रहा था कि जब से आंदोलन गर्म हुआ है और जो अत्याचार इनकी सरकार ने किसानों के ऊपर किए हैं, अभी तो ये किसानों के कुछ बच्चे रहते हैं शहरों में, तब इनको भूखी खानी पड़ गई। अब यूपी में स्थानीय निकाय चुनाव का जो रूरल वाला होता है, जिला पंचायत चुनाव जिसको कहते हैं, वो 1-1.5 महीने में होने जा रहा है। आपको छठी का दूध याद आ जाएगा, जो मुहावरा ना छठी का दूध, आपको पता लग जाएगा कि 2 सीटों से 300 सीट आप किसान मजदूर नौजवान की वोट पर बने हैं और उनको आपने धोखा देने का काम किया है। 300 से 2 आने में समय नहीं लगेगा। गद्दी हमने आपको सौंपी थी, आप हमारे सेवक थे, हम मालिक थे, अब आप मालिक बन गए, हमें दिल्ली में आप आने नहीं देते। 1.5 महीने से हम 200 से ज्यादा शहीद हो चुके हैं। क्या तरीका है? वार्ता आप करते नहीं है, किसी चीज का समाधान। चौधरी साहब, म्यूनिसिपल इलेक्शन तक सीमित रहते हैं, ये डिबेट किसान आंदोलन की कल करेंगे, पर आरपी सिंह जी प्लीज रिस्पॉन्ड, यू वांटेड टू कम इन।
पहली बात तो मैं इनको बता दूं, इनके नेता जो दल, इनके जो पलटू नेता है ना, जिनकी हिमायत कर रहे हैं, जिन्होंने कहा था बक्कल उखाड़ कर फेंक देंगे, बक्कल उखाड़ कर फेंक देंगे, और फिर बोला था गोलियां क्यों नहीं मारी। अरे आप दंगाई नेताओं, आपके नेता दंगा कराना चाहते थे, जिसकी जमानत जब्त होगी 2-2 बात बताओ, अगला चुनाव जाएंगे, मैं खुद आऊंगा कैंपेन करने उनके खिलाफ। समझ सारा एक एक करके बात करिए चौधरी साहब जी। नहीं चौधरी साहब ये मत करिए, इन्होंने नहीं बोला, आप इनको बोलने दीजिए। नहीं सर इनको बोलने दीजिए, ये गलत बात है चौधरी साहब, ये गलत बात है। सिंह साहब को बोलने दीजिए, उन्होंने आपको बोलने दिया। दूसरा भी बोल सकता है। नहीं सर एक सेकेंड, नहीं इन्होंने आपको बोलने दिया था, अब इन्हें बोलने दीजिए। आरपी सिंह सर, ओके आरपी सिंह जी चलिए। यही लेवल है इनका, ये टाइम खराब करना, ये कनाडा। अरे बक्कल उखाड़ने चले थे, अरे देश की फोर्सेस के बक्कल उखाड़ रहे थे, हम पुलिस वालों के बक्कल उखाड़ देंगे, गोली मार देंगे, ये सब बातें भाषा। अभी जब मुकदमे बनेगा, जानकारी आएंगी, सब पता लग जाएगा कि आपने क्या गोल खिलाए हैं। अरे सुनो एक मिनट, आराम से सुनो, बहुत सुना मैंने आपको आराम से। मैं बहुत दिन आपके हाथ जोड़ता रहा ये समझकर कि आप किसान हो, आप नकली किसान हो, आप किसानों के नाम पे मजाक कर रहे हो। अपने गांव में जाकर देख लो, बताना कितने किसान आपके साथ हैं। और सुनो एक मिनट सुनो, अरे एक मिनट सुनो मैंने आपको, अरे मैं बता रहा हूँ नकली किसान, अरे नकली किसान, सुनो एक मिनट सुनी मैंने बड़ी देर आपकी। बक्कल उखाड़ने वाले किसान आ गए, देश में आतंक फैलाने वाले किसान आ गए, लाल किले पे जाकर तिरंगे का अपमान करने वाले किसान आ गए। तिरंगे का अपमान किया था आप लोगों ने ना, आप वो किसान हो। आप कहते हैं सिद्धू बड़ा किसान है, हमारा अंग्रेजी बोलने वाला किसान है, करता है, गाना गाता है। Sir, let's come back to the topic. Sir. अरे सुनिए, RP Singh sir, let's come back to the topic. No, because he used all that language. He used all that language. उसके बाद हम यूपी जीते हैं, उसके बाद हम मध्य प्रदेश जीते हैं, उसके बाद हम राजस्थान जीते हैं, उसके बाद हम मणिपुर जीते हैं, उसके बाद हमने हैदराबाद में अच्छा परफॉर्म किया है। आप कहाँ की बात कर रहे हैं? आपने पंजाब में एक दिक्कत है, पंजाब में कारण है, हम समझ रहे हैं, उसको रिजॉल्व करेंगे पंजाब के इशू को, इसका मतलब नहीं। और पंजाब के अंदर सुन लो, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा था 90,000 रुपए का किसान कर्जा माफी करूंगा। आपने जाकर बोला कैप्टन के खिलाफ एक से गुटके साहब की कसम खाकर बोला कैप्टन साहब ने, मैं 90,000 करोड़ का कर्जा माफ करूंगा। कहा गया, जवान नहीं निकल तुम्हारा कैप्टन। तुम कांग्रेस के हाथ में बैठकर पुतली का गेम कर रहे हो, आप कांग्रेस का खेल खेल रहे हो। आपने कहा था हमारा जो मंच है राजनीतिक मंच नहीं होगा, आपके मंच पर सारे लोग राजनीति करने आ गए हैं, इसकी बात करने चले आप। एक सब निकाला अपने कैप्टन के साथ, कैप्टन के खिलाफ कि 90,000 करोड़ का कर्जा क्यों नहीं माफ किया? Singh sir, can I just go to my other panelists right now? Charan Singh Sapra, I know you want to come in. Please go ahead, sir. See, I'm seeing that the BJP spokesperson is quite excited, but the fact is that people who were talking about Congress Mukt Bharat, they have seen the verdict of people of Punjab. It is BJP Mukt Punjab now. Now, this same verdict can go ahead also in the other states to come. What happened This is a time. Sir, let's go one by one, sir. Please, it's a request. As well as Akali Dal. I never spoke in between. Yeah. Go ahead, As far Mr. as Sapra. the Akali Dal spokesperson was talking about the urban voters and the rural voters, let me remind them that in this election, the urban voter has also voted for Congress party. So all over the state, the urban as well as the poor voted for Congress. And also not only the Sikh, but also the non-Sikh have voted for Congress party. So this is a clear referendum in favor of Congress party, in favor of how the Congress or Captain Amrinder Singh has been ruling the state, and the BJP, Aam Aadmi Party and the Akali Dal have been washed out. We have won the semi-final. We are going ahead to win the final of 2022 also. All right. Okay. Majinder Singh Sirsa, I'll bring you in at this juncture. Would you reckon going to 2022 right now, which is just about a year away, you have lost the momentum, you tried hard to get back, you gave up cabinet berths, you gave up awards, you broke an alliance, but you gave the momentum to the Congress where the farmers' agitation is concerned, because it's seemingly feeding into at least this election, sir. So Preeti, as I told you earlier also, ये इलेक्शन जो है, ये इलेक्शन सिर्फ नाम की थी, ये तो डेमोक्रेसी की एक मर्डर था जिसमें पंजाब पुलिस वर्कर कांग्रेस के कम काम कर रहे थे। पंजाब पुलिस को ये जानकारी दी गई थी, हर एसएचओ को ये कहा गया था कि अगर तुमने एसएचओ स्टेशन में रहना है, ये वार्ड मेंबर जीतना चाहिए। सपरा जी आप अभी थोड़ी देर पहले तो कह रहे थे कि आप किसी के बीच में बोलते नहीं है, तो अभी आपको बोलना भी पड़ गया क्योंकि आपको सच सुना नहीं गया आपसे। तो आप मुझे बताएं प्रीति, आप स्टेट के लोगों से क्या उम्मीद करते हैं, क्या स्टेट से उम्मीद करते हैं जहां पे एक फॉर्मर होम मिनिस्टर, फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर को अटैक किया जाए,
उनको नॉमिनेशन ना करने दिए जाए और उनका नॉमिनेशन कराने के लिए जब सुखबीर सिंह बादल जाएं तो उनके ऊपर भी अटैक कर दी जाए। हर एसएचओ को ये काम दिया गया था कि आपने अपने वार्ड के मेंबर को जिताकर लेके आना अगर आपने एसएचओ यहां रहना है। बहुत सारी सोशल मीडिया पे वीडियो भी हैं और वॉइस मैसेजेस भी हैं। एंड आप देखें कि हमारे एक फॉर्मर मिनिस्टर जो हैं विरसा सिंह वल्टोवा, जब वो कैंपेन कर रहे हैं तो एसएचओ की वीडियो इतनी वायरल हुई, आपकी टीवी ने भी चलाई, किस तरह से एसएचओ नीचे खड़ा होकर उनको धमकियां दे रहा कि नीचे उतरो, और कैंपेन को भी नहीं करने दिया। कैंडिडेटों को पीटा गया, जहां टेंट लगे थे उनको दौड़ाया गया। ये पंजाब पुलिस को कांग्रेस के वर्कर की तरह इस्तेमाल किया गया है। इलेक्शन दूर नहीं है और इलेक्शन अभी आपको और भी मैं बता दूं, अगर इनके लिए सेमीफाइनल है 2017 में इनकी जमानत जब तो थी 2016 में बाई इलेक्शन में, लेकिन लोगों ने जब सत्ता में आप होते हैं तो आपकी बात चल जाती है। लेकिन अभी एक साल पहले इलेक्शन से आपको खुद समझ में आ जाएगा और 10 और महीने, अच्छा 8 महीने 10 महीने रह गए। और मैं सपड़ा साहब को फिर कहना चाहता हूं, अगर आपका कॉन्फिडेंस है तो अच्छी बात है। अगर आपको लग रहा है आपको इतना मैंडेट मिला है तो आपको इलेक्शन प्रीपोन करा लेनी चाहिए, क्योंकि आपको तो एक तरफा मैंडेट मिल रहा है। तो आपके लिए तो एक अच्छा सुनहरी मौका, तो आपको पता भी चल जाएगा कि लोगों का व्यू क्या आपके प्रति। Come in for a quick response, then I'm going to go across to Mr. R.P. Singh and Chaudhary Pushpendra ji. Yeah. No, I just wanted to say that the today's verdict is such a big shock. It's a shock treatment for Akali Dal that they are not able to come out of it. आप कितना ही बोलिए सिरसा साहब, लेकिन वर्डिक्ट बहुत क्लियर है। आपको कंप्लीटली रिजेक्ट किया, जो आपका दोगलापन था, द हिपोक्रेसी ऑफ अकाली दल हैज बीन एक्सपोज्ड. पीपल हैव नॉट एग्रीड टू व्हाट Harsimrat Kaur Badal or Mr. Sukhbir Singh Badal was talking about. You initially supported the ordinance and then you came out of the government. People know the duplicacy of Akali Dal. It has been exposed. So whatever you may say today, you may shout to top of your voice, whatever you may lie about the administration over there. Let me remind you, in Moga, the people who got falsely implicated into the case were congressmen. So you please remember, the police over there in Punjab is not biased. Their Congress leaders have been arrested in Moga, though they were not involved in the case over there. All right, I want to go back right now. पुष्पेंद्र जी, आपके पास फिर आऊंगी। अभी ये जो म्यूनिसिपल इलेक्शन हुए हैं, पंजाब के हुए हैं, बहुत सारे और इलेक्शंस हुए हैं, अभी म्यूनिसिपल हुए हैं, बहुत सारी स्टेट में हुए हैं। बीजेपी ने वहां पे बेहतरीन प्रदर्शन किया है। अब आगे जाके, जैसे आपने बताया कि यूपी का लोकल चुनाव होने वाले हैं, उसमें इफेक्ट पड़ेगा। हरियाणा के चुनाव आने वाले हैं सर, उसमें भी लग रहा है आपको इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पूरा इफेक्ट पड़ेगा। गांव-गांव बोर्ड लग रहे हैं कि बीजेपी वाले गांव में नहीं घुस सकेंगे। इस तरह के बोर्ड इनको ऊपर प्रतिबंध लगा रही है जनता। इनकी मीटिंग नहीं हो पाएंगी, ये इनको कैंडिडेट तक नहीं मिलेंगे, ऐसी स्थिति है। इनके खिलाफ भारी रोष है जनता में, जिस प्रकार से इन्होंने ट्रीटमेंट किया है जनता का, जो वादा खिलाफी इन्होंने की है। और इसका परिणाम, क्योंकि हमारे इतने लोग मरने के बाद भी ये नहीं जाग रहे, तो अंतिम वोट ही हमारे पास लोकतंत्र में हथियार है इनको सबक सिखाने का। जनता इनको सबक सिखाने मजबूती से जा रही है। आरपी सिंह जी, I'll come for one question. Now the fact, it is a fact, sir, that your party president JP Nadda met Jat leaders from Western Uttar Pradesh, met Jat MPs from MLAs as well from Haryana, and net there is an acceptance within the BJP about 40 seats could be impacted. 40 seats, Lok Sabha seats could be impacted due to the farmer stir. So at least that admittance is there. So there is a fallback of the farmer stir, not just in Punjab, Western UP and Haryana. That's come from your own party, sir, not anywhere else. Preeti, I'll surely answer that. Before that, I just need to tell Pushpendra Singh ji, आप इलेक्शन लड़ना, मैं आपके वहाँ कैंपेन करने आऊंगा, आपके खिलाफ हिम्मत करने। इस बार यूपी में कहीं भी आपकी जहाँ इच्छा हो वहाँ इलेक्शन लड़ना, मैं आऊंगा और आपको एक्सपोज करूंगा कि आप कैसे किसान नेता और कैसे किस प्रकार से खालिस्तानियों का साथ देते हैं और किस प्रकार से खालिस्तानियों करते हैं। आरपी सिंह जी, the question I asked you, sir. The question I asked you, why your own party admitting, sir, why the admittance of your own party, Mr. Nadda held a meeting with Jat leaders and, sir, okay, can I come in? Mr. Nadda held a meeting with Jat leaders. Net, what you've come to is, sir, 40 Lok Sabha seats would be impacted. Your assumption, not mine or anybody else's. Preeti, that's your assumption, sir, not my assumption, not my party. Can I complete? Now you ask a question, now let me answer that. We ongoingly hold meetings. It was not with Jat leaders. It was overall meetings with the people who are involved in the agriculture sector. So they were called and they were spoken to. And feedback was taken. How can we still do good for farmers? What else we can do for farmers? And how can we ensure that farmers should come on board? It is for that.
It's not for a community in particular. Sir, Balian Sahab, I'll quote. Balian Sahab from your own party has come on record to say कि किसानों में जो आक्रोश है वो हमारा फर्ज बनता है हम लेके जाएं गवर्नमेंट तक. And there is admittance, sir. There is admittance that there are seats which are in danger, which are impacted by the farm stir. No, I admit it in front. I just now said, you said that. I said, no, it was our farmers. Yes, we are still working on how can we ensure that we do whatever best we can do for farmers. We are not denying that. We are still, Prime Minister has categorically stated, we are still prepared to talk. When Pushpinder ji still want to talk, we still talk with them. It's not that. He can accuse of doing whatever, that political, because he want to do a political game, we'll do that also. But we'll still discuss and talk with farmers. Okay, all right. Okay. The three gentlemen from Punjab and Chaudhary Pushpinder ji, sorry sir, हमारा time खत्म हो गया है, but मुझे आपको आना था. Thank you, all three of you. But the fact is clear that we're just looking at the municipal polls. Just with a clear eye on the municipal polls, yes, the Congress has swept it. The BJP, in 20 years, it's gone alone. It's always been in alliance with the Akalis. It wasn't this time around. Has done fairly badly. Is this a referendum on 2022? Because the backdrop clearly for this was the farm agitation. Hi everyone, Preeti Chaudhary here. Hope you like this video. For latest news and analysis, like and subscribe to the India Today YouTube channel. And don't forget to press the bell icon to stay updated. Thank you for watching.